अच्छा, अब वो रिएक्शन उनके पढ़े स्टार्टिंग विद सबसे पहले तो ना एक रिएक्शन है कंबशन। ठीक है, लेट्स डू दैट। कंबशन का ये है कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स दे बर्न, ऑल ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, ऑल हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स क्या, ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स तो लिमिटेड होते हैं ना, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है। और उसमें था कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे बर्न मोर एफिशिएंटली। दे आर मोर, अच्छा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्लेमेबल। They are more flammable. अच्छा, anyways, combustion. So first thing is complete combustion. So you need to know how to balance equations, और ये मैं सारों के जनरल फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। Alkanes is CnH2n plus 2. Alkenes जो है that's CnH2n. Alcohols is CnH2n plus 1, OH. And carboxylic acid is CnH2n plus 1 COOH. ठीक है। तो remember the formulas of के सारों के जनरल फॉर्मूलाज क्या हैं। So if I have, कंबशन का हर रिएक्शन इस तरह का होगा। इफ आई हैव लेट्स से ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी C4 H2n plus 2, यानी डबल प्लस 2 दैट्स 10, so that's butane. It burns in oxygen, and when it burns in oxygen तो क्या प्रोड्यूस होगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब इसको बैलेंस करना आना चाहिए कि हाउ वुड यू बैलेंस दिस। So there's going to be balance the easy ones, 4 carbons, 10 hydrogens, so 5 H2Os, right? Oxygens कितने हो गए, that's 8 plus 5 कितने हो गए, that's 13. So what do I multiply? How do I make this 13? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.5 से। इज दिस क्लियर? जी सर। Yes, sir. अच्छा, इसी तरह लेट्स से उसका कर लेते हैं, पेंटेनॉल की कंबशन। सो दैट्स 5 कार्बन एटम, सो दैट्स C5. पेंटेनॉल क्या होगा, दैट्स पेंटेनॉल इज C5 H डबल प्लस 1, तो 10 प्लस 1 इज 11। ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी C5H 11. अच्छा, इसको रिएक्ट करें O2 के साथ, and the product will be the same. It's going to be carbon dioxide and, it's going to be carbon dioxide and H2O. So there are 5 carbon dioxides, 12 H's, so that's 6 H2Os. Oxygen balance करना है, so कितना होगा, that's 10 plus 6, 16. तो एक oxygen, one oxygen is already here. So you need how many oxygens? You need 15 oxygens over here. तो O2 कितना होगा, that's going to be 15 divided by 2. 7.5 होगा तो फिर 15 हो जाएंगे। ठीक है। Is that clear? जी सर। अच्छा, एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेते हैं, लेट्स से प्रोपेनोइक एसिड। The combustion of propanoic acid. ठीक है। तो prop is 3 carbon atoms, right? क्या जनरल फॉर्मूला ये। So prop is 3 carbon atoms. 3 का मतलब है कि 1 यहाँ पे है तो there should be 2, तो C2 H क्या होगा, 5, तो it's going to be C2H5
Remember, carboxylic acid में N की value जो थी, that was 1 less than the number of carbon atoms, ठीक है? क्योंकि वो एक कार्बन पहले यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चाहिए. So I'm going to burn it in oxygen and it will produce the same stuff, which is what carbon dioxide and balance color. So there's 3 carbons, so 3 carbons. अच्छा, और दूसरी साइड पे there is अच्छा hydrogens. How many hydrogens? You've got 6. तो यहाँ पे there's going to be 3 H2Os. Oxygen balance करना है, so that's 6 plus 3 9 oxygens. तो यहाँ पे कितने हैं? 2 यहाँ पे. तो I need 7 oxygens over here. तो यहाँ पे क्या होगा? That's going to be 7 divided by 2. Clear है? Yes. जी और सर. एक और कर लेते हैं कोई. Alkene कर लेते हैं. Let's say I have number 4. Hexene का reaction. तो C6H12, right? Alkene CnH2n होता है. अच्छा, reacted with O2. The products will be the same. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा. अच्छा, there are 6 carbons, so there's going to be 6 carbon dioxide, 12 hydrogens, so 6 H2Os, right? तो oxygens कितने होंगे? That's I've got 12 plus 6 18. तो यहाँ पे कितने होंगे? 9. ठीक है, क्लियर है? जी सर. अच्छा, और ये जो रिएक्शन है, दिस इज कंप्लीट कंबशन. दैट मींस के excess O2 is used. एक और इसकी वर्जन होती है which is incomplete combustion. जब भी वो काला धुआं सा निकल रहा होता है ना, that's incomplete combustion. There is limited supply of oxygen. What happens in this is that carbon and carbon monoxide also get produced. Carbon जो होता है ना, that's the black soot. तो वो जो black smoke होगा ना, that's mostly carbon. वो जो कालक सी होती है ना, when something burns, that's carbon. Carbon monoxide, on the other hand, is a very poisonous, toxic gas. It causes choking. He combines with red blood cells, basically. And they no longer can transport oxygen. तो ये harmful gas है. So ये basic combustion complete हो गया. Just remember कि incomplete combustion also produces carbon and carbon monoxide. और उसमें one more thing is that fossil fuel combustions जो है ना, that itself is very harmful. और ये mainly कहाँ पे होता है? It's car engines or factory. मतलब basically 10 years ago, almost all energy was produced. Yet even 20 years ago, almost all energy was produced by fossil fuel combustion. Power plants से लेके cars, everything.
अब वो obviously we are moving towards renewable energy, ठीक है, at a very fast pace. So fossil fuel combustion. So it produces or causes global warming. ठीक है, CO2 is a greenhouse gas. और CO2 की वजह से a lot of heat gets absorbed or trapped. तो CO2 traps heat into the atmosphere, and उससे फिर फर्क क्या पड़ता है? What happens because of that is you have melting of glaciers. Environment में energy ज़्यादा होगी, so you'll have more unpredictable weather patterns. You will have rising sea levels. बस ये सब कुछ है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं। अब इससे आगे है कि we're going to move towards alkanes and we'll see what their reactions are all about, ठीक है। तो alkanes were your कौन से hydrocarbons थे? They were your saturated hydrocarbons. इनका जनरल फॉर्मूला क्या था? It was CnH2n plus 2. All of them had single bonds, right? Saturate का मतलब ही ये था, ठीक है। So you have अच्छा, ये कौन सा? It's butane, right? ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, physical properties first thing. They normally have low melting points and boiling points. Second, they have like the low melting points, boiling points है. Then they also have, I mean, mostly और क्या इनके बारे में? Low melting, boiling points और क्या होते हैं? Physical property. Don't conduct electricity, right? I mean, they're simple covalent molecules. एक और तीसरा, they are not soluble in water. But dissolve in oil. Yeah, organic solids. पानी में dissolve नहीं करते, ठीक है। So those are your physical properties, ठीक है। अच्छा, normally इनका एक ही reaction होता है, which is known as a substitution reaction. ठीक है, so they normally have a substitution reaction, which is उसमें होता क्या है substitution reaction में? You've got it's also known as chlorination or bromination.
So the reaction is pretty simple. If I have ethane, so chlorine would come in and react with it. और उसके अंदर एक must condition है कि you need ultraviolet light, or also known as sunlight. Now what happens is कि one of the H's is going to get substituted by Cl. So one of the H's gets knocked out and gets replaced by Cl. ठीक है, तो Cl आ जाएगा उसकी जगह पे. And वो जो knockout हुआ है ना H, that also reacts with, it also ends up reacting with Cl. तो वो एक Cl बना देगा, ठीक है. So that's it. And it could be any number of H's. That could be, it's not just one H. Many H's could get knocked out randomly. And they will be replaced by, they'll be replaced by Cl. और सारे के सारे भी नॉकआउट हो सकते हैं, ठीक है. तो ये हो रहा है बस. Cl comes in, alkyl chain carbon chain को कहते हैं. Chloroalkanes. So this one is, इसका नाम देख लो, this is chloroethane. ये वाला जो होगा, this is also chloroethane. It's trichloroethane. The ethane तो है क्योंकि it's got 2 carbon atoms. It's got 3 chlorines now. अच्छा, ये clear है? Is this clear? जी सर. ठीक है. And the other thing is कि it could also happen with bromination. ठीक है, same reaction with अच्छा, इसमें ये कि that's it. ठीक है, alkanes खत्म. ठीक है, that's it. You just have a substitution reaction. Just make sure you know how to write the equation. और वो कंडेंस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. तो इसकी जो कंडेंस फॉर्म होगी, that's going to be what? CH3. अच्छा, क्या बनेगा? That's going to form CH3 CH2Cl. तो सेम रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन खत्म हो गया alkanes. ठीक है, we're going to move towards jump to alkenes, which are CnH2n. अच्छा, alkenes are your unsaturated hydrocarbons. क्या होता है इसमें? डबल बॉन्ड होता है. ठीक है. सो इफ आई हैव प्रोपीन
So there's going to be at least one double bond. Okay, that's what defines what an alkene is. तो ये आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल है. अच्छा, प्रोटीन में कि you've got क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? सेम एज alkanes, कोई फर्क नहीं है. तो दोबारा लिख जाए. I'm just going to write same as alkanes. ठीक है. लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इट विल मिक्स. और क्या था? इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा. So everything is the same as alkanes. Except के वो जो पिछला वाला था ना alkanes, ये याद है, alkanes are not very reactive. ठीक है. अच्छा, alkanes are not very reactive. But remember, alkenes are very reactive. ठीक है. ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, that's very reactive. Alkenes are very reactive और प्लस इनके सारे रिएक्शंस जो होते हैं ना, they're known as addition reactions. ठीक है. तो they undergo addition reactions. ठीक है. Now, pretty much all alkene reactions would be similar to this. अच्छा, कि उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ये बस थोड़ा सा कर लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स इज कि जब भी आपको कोई एल्कीन नजर आएगा ना, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. इट्स अच्छा, so whenever you have an alkene, let's say this is propene. Now the reactive part is this double bond. That is your reactive part. So many different molecules are going to get attracted to this double bond and they're going to react to it. Okay, so many different molecules are going to react. So for example, मेरे पास एक molecule है XY का. So ये XY का molecule is going to go over there. Every time the reaction would be very similar. Okay, what will happen is the XY would come in और ये जो alkene है ना, double bond, ठीक है, specifically these two carbon atoms जिनको मैं highlight कर रहा हूँ. ठीक है, इसको कर देते हैं red. अच्छा, the double bond over here is going to react and the X and Y will get added to it. तो एक कार्बन के साथ X ऐड हो जाएगा और दूसरे वाले के साथ Y ऐड हो जाएगा. ठीक है. Every time the reaction is going to be similar to this. ठीक है. The molecules are going to come in
and they will react and get added onto the double bond. Is that clear? Yes. जी sir. So बस ये alkenes के 4-5 reactions हैं, so we'll discuss those reactions in the next class. But remember, all reactions would be similar to this. Wherever there's a double bond, the molecule is going to come in, and it's going to get added or attached to the double bond. The double bond itself will turn into a single bond. ठीक है? तभी वो extra bonds बना सकते हैं ना फिर. ठीक है? तो चलिए we'll continue tomorrow then. ठीक है? ठीक है सर. सर वो आप जरूर वो पिछली क्लासेस की लिंक्स भेज देना. हाँ, मैं आज कोशिश करता हूँ, मैं सारी वो कॉपी करके ना मैं लाइन में सारी भेज देता हूँ. ठीक है? ठीक है सर. ओके. चलो, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज. ओके, टेक केयर.